Assalamu alaikum, everybody, and welcome to another class. Today, we are going to talk about a very simple topic where you just need to remember a few things, but also understand the principle of periodicity. This is a very powerful principle, and this is what makes periodic tables so useful and so versatile whenever we talk about chemistry or whenever we study it. So, the idea is that periodicity simply means something repeats and it repeats with a periodic function. It repeats every so often. There's a limitation to how it does that, and we can predict based on this. So it gives us the power of prediction. There are many trends that you need to be able to figure out for A levels chemistry. For example, the trends in radius, for atoms, for ions, the ionization energy, electron affinity, electronegativity, electrical conductivity, melting point, boiling point. Many of these terms you're familiar with, many of these terms we will learn as we continue with the syllabus. So, before we get into that, you have to first understand that the first two periods are special in the periodic table because they are not like the other ones. The first two periods, they just have fewer elements. And the first period, as you know, has just hydrogen and helium in it. So there's the hydrogen, which is the uh, atom, which you have helium, you have helium, which is the noble gas in this, and this shows that you need two electrons to be like noble gas. So that is why hydrogen can at most gain one electron and be like helium to do that. Similarly, lithium will lose one electron, be like helium. So that's the first shell, two electrons required. Uh, Second period is where you have the second shell and it has at most 8 electrons, as we figured it out from the subshells. There's S, there's P. S has one orbital, so 2 electrons. P has 3 orbitals, so 6 electrons, total 8 electrons in there. All of these elements, they're really small and they have very high ionization energy values because they are all small. So the radius is small and it takes large energy to remove the electron. We will talk about trends from period 3 onwards. And primarily, if you understand it from period 3, that same thing will continue in the remaining ones as well, with something added to it. Before we get to that, let's see what uh, periodicity or what patterns do we see in groups. So as long as groups are there, as you know, the groups all share the same chemical properties. So there is similar, sorry about that. There's similar chemical properties for elements in a group, and that is because they all have same valence electrons and they all behave in a similar fashion. Sure, there are some trends as well when you get to bigger atoms or when you get to the non-metal side, the right side, but this is true for the case of for this is true for the elements that we will be talking about. So one important idea that remains is that atomic radius, the radius of the atom that you have, increases as you go down. Instead of writing increase, I will write this, and instead of saying decrease, I will write this, and that basically shows how the thing continues to go. Okay, so as you go down the group, the atomic radius increases. What's the reason? The reason is that you have more shells being added. Every period tells us that one shell has been added. So these atoms have more shells, so the electrons are more away, they are located further away from the nucleus, and that tells me that the radius is going to increase as I go down. But how about atomic radius across a period? So across a period, what are you adding? You're adding more protons as well as electrons, but not shells. So the reason for this was they were increasing because more shells, and more shells, even with more protons, this is the dominant effect that's coming out. So this is for the radius. But what about the group? What about the period? So across a period, when I say across a period, I move towards the right. Across a period, atomic radius decreases. And the reason for that is simple. There is more proton number, so more nuclear charge or effective nuclear charge. And because of that, more effective nuclear charge, the atoms pull on the valence electron with more force. So even though the shell is the same, so that means there's same level of shielding, which is going to increase in the case of down the group, but more nuclear charge and the same shielding tells me that the atomic radius
will remain the same. Now, it's not exactly same, it's roughly the same. So I will say similar shielding because they are in the same shell. थोड़ा सा फर्क पड़ता है when you have electrons in pairs in the orbital. So वहां पर थोड़ी सी repulsion आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा radius पे फर्क आता है, but वो बहुत ज्यादा dominant नहीं होता. It is still the nuclear charge that trumps everything else in this case. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला है कि एटॉमिक रेडियस हम मेजर करते कैसे हैं, बिकॉज एटम की तो कोई लिमिट नहीं है. सो हम एटम का रेडियस कैसे पता करते हैं? सो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इजिएस्ट है नोबल गैस. नोबल गैस में उसका न्यूक्लियस, और हमें एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी एक टेक्निक है, उसके लिहाज से न्यूक्लियस तो बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है. और उसके इर्द गिर्द हम देख लें, अच्छा ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इनके बीच का हाफ डिस्टेंस, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड करते नजर नहीं आते, हमें ना जो उसका एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी करते हैं हमें न्यूक्लियस नजर आते हैं. सो अगर हमें एक न्यूक्लियस यहाँ पर नजर आ रहा है और एक न्यूक्लियस यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑल विल डू इज विल बी लाइक ओके हाउ फार आर दीज एंड विल जस्ट डिवाइड इट इन हाफ. सो इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस. बट द थिंग इज कि यही हाफ द न्यूक्लियस, अब यहाँ पे नोबल गैसेस हैं तो वी क्लियरली नो कि नोबल गैस के केस में हमारे पास इस तरह से केस होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रियली शेयरिंग, और तो वो एक दूसरे से दूर हैं. बट in many cases like covalent substances, like let's say take the example of chlorine. So chlorine के केस में तो उन्होंने शेयरिंग की हुई है. So उनके न्यूक्लियस का हाफ डिस्टेंस तो यहाँ पे ये पूरा एरिया ओवरलैप कर रहा है, मतलब इसका रेडियस इतना होना चाहिए और इसका रेडियस इतना होना चाहिए, और ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं. सो अगेन there is no better technique than this. So what we do is we'll simply do कि इसका जो half होगा ना, the distance between the two nucleus, and we half it, that is our atomic radius. Lastly we have metals. Metals में relatively आसान होता है because metals में क्या होता है कि हमारे पास lattice होती है, and in that lattice you have electrons loosely like they are all free, and you have many different cations इन द लैटिस. तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हमें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इनके न्यूक्लियस का पता चल जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उनके हाफ डिस्टेंस को देख लेते हैं, एंड दिस गिव्स अस द मेटेलिक रेडियस. नाउ यू माइट आर्ग्यू कि ये मेटल का एटम तो है ही नहीं, ये तो आयन है, एंड दैट इज फाइन, वी डोंट हैव अ बेटर टेक्निक. सो दिस इज 3 different ways by which we measure the atomic radius, and we approximate कि हाँ ये ऐसे ही होगा. And again, because across a period effective nuclear charge increases while shielding remains roughly the same, इनका हम कह सकते हैं कि रेडियस सिमिलर ही रहेगा. आई वुड सजेस्ट कि अब आप जरा मुझे इनमें इन 3 एटम्स में बताएं सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा. So let's say I have magnesium, sulfur and silicon. In this case all you have to figure out is कि अच्छा periodic table में कहाँ पर है, and yeah, so in the periodic table magnesium is most towards the left, silicon is in the same period, so silicon उसके बाद आएगा, and sulfur is in the same period, वो उसके आगे है, तो इस तरह से हमारे पास है. But imagine if they were not in the same period. Let's say I had to do magnesium, strontium and radium. Now because they're down the group, the trend is going down the group, so magnesium सबसे छोटा होगा, strontium उससे बड़ा होगा, और radium उससे भी बड़ा होगा, because you're adding more shells, and because of that you can clearly see कि अच्छा इनमें structure कैसा होगा. Examiner usually asks you about the reason for this, तो वो भी बड़ा आसान है. We can give the reason from effective nuclear charge or the shielding from the new shells. Similarly, what about the ion? Ion का radius कैसे change होता होगा? So we have to understand that in the case of cation, you're losing electrons, and most of the time you're just losing all the electrons in the last shell. So पूरा shell ही खत्म हो जाता है, which means that there are 2 main reasons happening here. There is more effective nuclear charge. So because there's an overall positive charge, so there's an increased effective nuclear charge, जिसका मतलब है कि attraction ज़्यादा होगी. Secondly, जितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो ज़्यादा पुल होते हैं. Whether you lose the shell or not doesn't matter. Even in ions where you don't lose the shell, मतलब calcium का +1 है, the shell is still there, but still there is greater pull. पहले वही 20 protons 20 electrons को pull कर रहे थे,
Now they're pulling on 19 electrons. Pull ज़्यादा हो जाती है. And because of that, they are being pulled more. So उससे क्या होता है कि अगर आपके पास radius ज़्यादा है as the atom, the cation's का radius will be smaller. So that's the important idea, that cations are smaller than the atom. What about the anion? In the anion, you're adding more electrons. Okay, so this is the case for cation. And in the case of anion, you're adding more electrons, which means more shielding. Whether it's from the same shell, whether it's from inner shells, the pull is reduced. पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अब वही 20 इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स ने 21 इलेक्ट्रॉन्स को अगर पुल करना है तो हमारे पास वो पुल कम हो जाएगी. And secondly, there's going to be more shielding and reduced nuclear charge. So उसकी वजह से they're going to be pulled less strongly. So the anion is going to be bigger. Okay? So that's an important idea to remember. कि down the group, हमारे पास cation जो है वो atom से छोटा होगा और anion जो है वो atom से बड़ा होगा. And that is the case down the group across the period. But how does a cation and an anion compare? Now for that you have to understand that within the same period, there are two kinds of ions going to be formed. हमारे पास ये atom है. Let's take the atoms in general. तो वो हमारे पास roughly इस तरह का trend आएगा from left to right for the radius of the atom. So let's say ये हमारे पास atom का radius है. Let me just draw it out. So यहाँ पे हमारे पास this is group 1, group 2, group 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Obviously they're not bonding, so उनको मैंने लिख रहा हूँ. So roughly हमारा atom इस तरह से होगा. ये trend होगा हमारा. Cations को अगर हम देखें तो हमारे charges किस तरह से होंगे? +1, +2, +3, +4. And anions के charges -4, -3, -2, -1. Not only are the atoms going smaller, the trend in charges is changing. The charges are increasing in this case and they're decreasing in this case. ठीक है? जिसका मतलब है कि the size of the atom will or ion will not change in the same pattern. In the case of silicon, for example, let's say हम period 3 में silicon को देखते हैं. Silicon is in group 4. उसका atom in all the cations that we have, उसका atom सबसे छोटा है और उसके ऊपर charge भी सबसे बड़ा है. That means the pull is going to be much, much stronger. So इसके जो cations होंगे वो थोड़े से इस तरह से trend show कराएंगे. Because in the cations, not only are you getting more nuclear charge, you're adding more protons. So obviously a much bigger effect of more nuclear charge. And you're losing the most electrons as well. So all of these things mean that the pull from inner electrons is going to be much, much higher. But in the terms of anions, what are you getting? You're gaining more electrons here. So यहाँ पर shielding सबसे ज़्यादा add हो रही है. यहाँ पे उससे कम, यहाँ से उससे कम, यहाँ. Technically shielding inner shell से आती है. So इतना ज़्यादा उसका फर्क होना नहीं चाहिए. And that is true. इतना ज़्यादा उसका फर्क होता भी नहीं. But within the same orbital, pair repulsion हो जाती है. So again, if you can argue कि वो बहुत ज़्यादा उसका pronounced effect नहीं होता, तो फिर किस चीज़ का ज़्यादा impact होता है? Nuclear charge का. In the case of group 7, you have the greatest number of protons from in the same period. मतलब अगर मैं यहाँ सोडियम से स्टार्ट करता हूँ तो 11 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे in the case of chlorine 17 protons उन्हीं 3 shells को pull कर रहे हैं. And it has gained the least number of electrons. So उसका जो effect आया shielding का या repulsion का वो बहुत ही कम आया. The nuclear charge is much bigger and उसका impact भी much bigger होगा. So roughly the anions are going to be like this. So if you think about it, this is how the pattern is going to be. The group 4 will have the greatest variation in this case. And noble gas will not change at all. So इस तरह हम कह सकते हैं कि cations का
पिछले नोबल गैस के क्लोज बनता है और एनाइंस का अगले नोबल गैस के क्लोज बनता है. But the trends are still in this fashion that you can see that the cations get smaller and smaller and smaller until you get to group 4, and then the anions get smaller and smaller and smaller from that point onwards, and that is how the ions are going to be. So across the period, that's how it goes. By the way, there is another way to look at this. What if I don't want to consider the same period? What if I want to consider the ions with the same number of electrons? What if I want to consider कि अच्छा ठीक है हमारे पास नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन जैसा हो जाता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन जैसा हो जाता है, एंड सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन जैसा हो जाता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन जैसा हो जाता है. सो हाउ डज देयर रेडियस कंपेयर टू नियॉन? कि ये चारों फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड आर ट्राइंग टू बी लाइक देयर नोबल गैस, एंड ये चारों फ्रॉम द नेक्स्ट पीरियड आर गोइंग टू बी लाइक देयर प्रीवियस नोबल गैस. कि अगर यहाँ पे नियॉन होती तो ये नाइट्रोजन से कहानी शुरू होती और कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम and silicon, they're all trying to be like the previous noble gas. So how exactly does that trend hold into account? So turns out in this case, we will call these isoelectronic ions. इनके केस में हमारे पास वही ट्रेंड आता है जो हमें एटम के केस में मिलता था. The trend is going to be like this, where the noble gas is in the middle. जो उसके next period के cations हैं, they are like this, and the same period of the noble gas के जो anions हैं, they are going to be like this. So that's an interesting way of looking at things. So aluminum and nitride, they both have 10 electrons, but aluminum is the smallest of these, and that is how the trend will be shown. Okay, so that's another periodicity that we need to know about. Why are we looking at this? Because we need to understand all of this. We need to put it all together to figure out how the ionization energy changes across a period. There are 4 factors, and usually how it changes is like this. I'm going to draw a rough diagram of how the graph is expected to go. The graph will go up, then down, then up for 3 cases, then down, and then up for 3 cases. ये वाला down बहुत ज्यादा नहीं होता. Sometimes ये बहुत थोड़ा सा भी हो सकता है. And then up. And here's how it goes. हमारे पास 1, 5, 6, 7, 8. That's how it goes. Why exactly is this happening? And why is it reducing here? So remember, मैंने आपसे कहा था कि attraction or repulsion. So as I was saying, shielding is one factor. As I was saying, shielding is one factor that increases the repulsion. There's another factor. अगर एक ही orbital में 2 electrons आ जाएंगे, we call that electron pair repulsion. कि अगर एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपस में रिपेल करेंगे, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा. And then there is one factor that obviously doesn't directly increase or decrease the attraction, but उसका impact आता है, उसको कहते हैं रेडियस. तो 4 रीजंस हैं हमारे पास. अब देखते हैं इनमें से डोमिनेंट कौन सी वाली होती है, and how does that impact or explain what's happening here. So let's say I talk about period 3. Sodium से बात start करते हैं, and we'll go up to argon. So in the case of sodium, my configuration is like neon, and after that, so यहाँ पे neon है इन सब के पीछे, और यहाँ पे 1s1 है, 1s2 है. Clearly, 1s1 से 1s2 का जो सफर है, उसमें you have added more protons. तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन ज्यादा हुई है, आयनाइजेशन एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर रहे हैं. बट शील्डिंग आपने बहुत ज्यादा ऐड नहीं की है. क्यों? शेल वही है, सब शेल भी वही है. रेडियस पे थोड़ा सा इंपैक्ट आया है, और वो भी कम हुआ है, जिसका मतलब अब फिर ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कि अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है.
रेडियस छोटा हो गया ना. सिर्फ रिपल्शन में एक केस है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. उसी एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले था, 1s1 में ये था, अब आपने 1s2 कर दिया. बट ये इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा जितना ज़्यादा इन दो फैक्टर्स ने उसको आउट स्कोर कर दिया, आउटवे कर दिया. सो क्लियरली ये हमारे पास ज़्यादा होगा. बाय द वे, माय बैड, दिस वाज दिस इज द थर्ड पेयर ना, तो ये 3s2 होना चाहिए. Now, why is there a decrease? Let's see over here what happened. Aluminum के केस में you don't have 3s2, you have 3s2. In आगे सब में 3s2 होगा. And after that, you also have 3p1. So clearly what has happened here is कि यहाँ पर 3p1 हो गया और ये s पीछे से उसको रिपेल कर रहा होगा. So there is slightly more shielding because of this change in subshell. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, रेडियस छोटा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन बढ़ेगी. बट शील्डिंग काफी आ गई है, सबशेल चेंज हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फॉल आएगा. सो दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज शील्डिंग. नाउ इट्स गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज फ्रॉम हेयर टू हेयर यू आर एडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन. आपस में वो कोई एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक दूसरे से उनका ताल्लुक ही नहीं है. दे आर इन कंप्लीटली डिफरेंट ऑर्बिटल्स. But at the same time, you're increasing the nuclear charge, you're decreasing the radius. Definitely attraction बढ़ रही है from here to here to here. And now you're at 3p3. And suddenly you add one more in here, in 3p4. And साथ ही साथ electron pair repulsion बढ़ गई. And the moment that happens, there's going to be a slight decrease. Sure, nuclear charge बढ़ रहा है, radius कम हो रहा है, तो attraction बढ़ रही है, which is why ये value इस value से बहुत ऊपर है. But at the same time, you've added electron pair repulsion की वजह से ये आया. And now these all factors will contribute to the next ones. तो अगले वाले के लिए ये है, तो वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और ये है, तो अब यहाँ पर कम होना चाहिए था उसको, क्योंकि रिपल्शन हुई है. But at the same time, न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ गया, रेडियस बहुत कम हो गया, and that is what they wins. So examiner is going to talk about कि पहली बात ये है कि ये दोनों डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि ये ओवरऑल इंक्रीज क्यों हो रहा है. ओवरऑल इंक्रीज करते हुए अट्रैक्शन की बात ज़्यादा डोमिनेंट है, और इसको डिक्रीज करते हुए हमारे पास शील्डिंग ज़्यादा आ रही है, और इसको डिक्रीज करते हुए इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ज़्यादा आ रही है. एंड दैट इज व्हाट वी सी इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस. Okay, and that is it for the ionization energy and the trends that we see in this. One more thing about down the group, although we talked about it earlier as well, down the group, the radius is increasing at a tremendous rate. न्यूक्लियर चार्ज उसको काउंटर कर ही नहीं पाता, और उसकी वजह से शील्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सॉरी, रेडियस इज इंक्रीजिंग, शील्डिंग विल बी इंक्रीजिंग. सो डाउन द ग्रुप ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, ये शील्डिंग, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप ionization increases rapidly. And that is the trend that we see in this case. All right. Thank you so much. See you in the next class. Allah Hafiz.